another वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है संदीप ने, और संदीप का मैसेज मैंने पहले भी पढ़ा था ईमेल में, बहुत अच्छी ईमेल लिखी थी। एंड यस संदीप, हमें पहले भी आपका मैसेज मिल गया था और मैंने शाउट आउट भी दिया था। आई थिंक आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी। और यहाँ पर मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ डॉक्टर श्री कुमार को, जो हमें बहुत अच्छी ईमेल्स लिखते हैं, हमें अच्छी अच्छी सजेशंस देते हैं और साथ ही साथ में हमारा जब चैनल ग्रो करता है उस पर भी हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो हमें संदीप ने सजेस्ट की है, और वीडियो का टाइटल है व्हाई डिड आई ट्रैवल सो मेनी टाइम्स टू इंडिया। वेल, टॉपिक तो वाकई में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग जितनी भी वीडियोस देखते हैं उसमें फॉरेनर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं। आज हम देखते हैं इनका व्लॉग, जो कि हम लोग फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का विजन लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। और उसके अलावा आपको हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। I welcome all of you to my second video on YouTube, and I'm super happy that you decided to watch my second video. Okay, I think you guys really have to get to know me and my really weird sense of humor. Alright, I hope all of you are fine. I hope you're doing well during this lockdown and using your time efficiently. Probably some of you also gained as much weight as I did, because I just try out new recipes and I keep on cooking, and the lockdown has definitely affected my body weight, but I think that's just part of it somehow. Alright, so let's not drag this intro for too long and dive into the story. Many of you asked me where, how and why did your crazy addiction for traveling to our beautiful country, India, actually started from. I hope this sentence was correct because it was so long. I just want to dive a bit into this question and give you some information. You know, it sounds like as if I'm giving a presentation here in university. Well, so I want to share some pictures, I want to share some impressions, some experiences, some photos, and just share a bit more of my trips with you so that you guys can imagine. Everything started in 2017, and my lovely dear friend Latoya got invited for a wedding in Kerala from her friend Aparna, and it so happened that she also asked me whether I would want to join. It was always my biggest dream to travel to India, always. For me that was something really big, and I was so nervous and excited and just full of happiness when we started planning our trip. So we planned everything, we set off to India, we attended the wedding, and we traveled a bit to many different places. डिफरेंट है, लाइक फॉरेनर्स जो एक होता है ना, बिल्कुल वो वाले नहीं है ना, बिल्कुल मिक्स्ड लग रहे हैं। First trip to India 2017 closed. We came back to Germany. We had an awesome time. We had such a unique time, guys. You can't imagine how it felt like the time the plane landed and I would just go out of the plane and realize I'm right now in Bombay airport. I'm in Bombay. And sorry, I don't want to go too deep into this topic, I know, because otherwise it's gonna just drag my video and delay all the other information and so on. But so the second I got out of the plane and I stepped out of the airport, actually I realized it's so hot. The climate was very humid because we actually came during monsoon time, which is probably not the best time to travel, but we were so lucky that there was actually no rain until 14th or 15th of August as far as I remember, and we had a beautiful trip. But again,
If you want to know more about this, I gonna make a separate video, because otherwise I just gonna keep on talking. We came back and I decided, hey, why don't we just go to India again? And just out of fun, actually, I looked up flight prices and I thought, probably we can plan a second trip. And you need to imagine that the first trip happened in August, and I literally thought of going to India again in December, so just a couple of months after our first trip, basically. And on our first trip we also made friends, we made new friends, and these friends invited us for a wedding in Goa. Oh, wow. Which was also the reason why I checked the flight tickets after coming back. I found really cheap flight tickets. I sent a screenshot to Latoya and she was like, sure, let's do this. I was like, oh my god, it's so awesome. And yeah, we planned everything. We went to India again, we attended the wedding, we spent New Year's over there, we had a couple of road trips. Again, awesome stories. I also made a photo album, so if you're interested, I probably could share some impressions with you. And after that we came back in January 2018. As some of you probably know, I'm doing my Masters of Education, pursuing my master's degree right now, and that time I was in my bachelor's. Hopefully I'm gonna become a primary school teacher, and in our university it's obligatory to complete, I don't know, I think it was like 80 hours of internship. So we had a couple of internships that we would have to carry out, and this one was still left. And I remember that I would go, I think I went to the office and university and just asked, is it possible to do this internship abroad? And they confirmed it. They said, sure, that's no problem. And I got an idea and I thought, why don't I just do it in India? And imagine, that was in January, and the internship basically was supposed to take place in March. And I checked the flight tickets, and my birthday is in March, so that's why I got some money, so I could save some money. And yeah, I decided to go to India again and just carry out my internship in a couple of schools in Karnataka. That was a third trip. After that, I thought, why don't I just go to India for 1 year? Now comes also a topic that is, or a point that is really important to me, is that I always wanted to work with underprivileged children. That was my main aim. So if some of you got this question of, why did you decide to go to India for 1 year? My answer is, my main aim was to work with underprivileged children. And I'm not saying it to, I don't know, to make people believe, she's such a good human being. I really feel that, like, this was always my dream, and I thought, I'm almost done with my bachelor's degree, and I can actually take a break in between of 1 year and then just continue my master's after this year abroad. And it was just the best time for me to go to India. So I did this, and I applied for an organization in Germany which is called AFS, actually quite popular. And in this organization you can apply for a country, and you can also kind of prioritize your project, so basically the work you would like to do in that particular country. So just now mentioning, what I did is called a volunteer service, so it's a social service. I didn't get paid or anything. That was totally voluntarily. Again, if you want me to make another video about the entire organization stuff, how did it work, how did I apply there, if you're interested in that by any chance, let me know, because AFS is a quite popular organization all across the globe. So my batch contained of 60 people, and all of us went together to South India. So we also had preparation seminars. We got prepared for our year abroad. It was so informative, guys, you have no idea. I learned so much, but I don't want to go into depth, otherwise this is going somewhere else. We were spread all across South India. Some of my friends, or that time just, other volunteers,
They Yeah, were that's pretty placed South Indian in में है. Pondicherry, some others were placed in Chennai, some others were placed in Bangalore, Mysore, everywhere in South basically. Well, I don't want to say unfortunately, I got a project in the school which was not a specialized school for underprivileged children. But then I thought, well, this is the project that I got, this is my destiny, and it is also going to teach me something because I'm going to gain more teaching experience for my future profession, and I can support the teachers over there and I can still have a lovely time. And this is exactly what happened. I spent my year in Mysore. I think all of you probably already know that. Most of you, not all of you, most of you probably already know that. Just to quickly answer the question of, did I make bad experiences? Yes, I can tell that, yes, I did. I made a lot of good experiences. I had an unforgettable time, and on the other hand, I also faced situations which were quite unpleasant, which didn't make me comfortable. So there's a lot to talk about, and I don't want to address this in the present video. So basically all of us had the same flight back to Germany after our volunteer service was over, and I thought, no, I want to stay, so I decided to travel to Dubai and apply for a tourist visa and then come back to India, and that was basically my 5th time. शोले वाली साइड है. कौन सी? शोले मूवी वाली. नहीं, डिफरेंट लग रही है ना. क्या बात. डिफरेंट लग रही है ना, मतलब This. I came back in August 2019 back to Germany. Well, the last time I've been to India so far was in January 2020 along with my mother, because I really wanted my parents to experience the culture and experience this country and kind of like see through my eyes and see where I've lived, the places I've visited. And my father unfortunately is pretty much scared of going by plane to such an extent that he would literally not even come near an airport. So he already made it quite clear that he will not enter a plane, especially not for such a long time, and unfortunately did not come along with me. But my mother is happily quite the opposite, and she was very excited and she enjoyed this trip so much. Maybe in future, I don't know if she would be ready for it. I could also think of addressing our last trip, actually the latest trip, in a video and ask my mother a bit what were her impressions and you know, and just interview. So I hope you got some more ideas of how our trips look like and just everything that has happened since 2017. And of course, I definitely gonna plan to come back to India. Unfortunately, I can't tell you guys when and how, and because of this corona crisis, everything basically at the moment is just really uncertain. We don't know what's gonna happen next. We don't know when they're gonna open the borders, and we don't know when any one of us can actually travel again. So I just hope it's gonna be soon, because I already feel, I don't know, I feel homesick. It might sound really awkward, but it's true. I feel so connected to India to such a level that I cannot be in Germany for one entire year. I can't. That might sound really crazy and insane to some of you, but this is just the truth. Trust me, I have to go to India at least once in a year to be happy. Alright, so I hope I didn't bore you with this video. थोड़ा सा And emotional. let me know in the comments
and there's definitely more waiting for you. You know, I'm just trying to get into YouTube. I'm just trying to get into sitting in front of the camera and recording yourself again and again and again and again. Because I don't know where are my thoughts, but I want to say so much, and then I keep on repeating stuff, and I stumble over words, and trust me, it's not that easy how it usually looks like on a lot of YouTube channels, but I'm trying my best. That's it, guys. I hope you enjoyed my video, and I wish you, all of you, a beautiful day. The sun is shining here in Germany, and thank you for your support. Thanks a lot. Dhanyavad. Dhanyavad agallu. Shukriya. Thank you. अगर बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो को देखे एक मुझे मुहावरा याद आ रहा है। मुहावरे को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज कहते हैं, बिल्कुल। वो है ना, जिन्हें लोर नहीं तकिया जमिया नहीं। वो मुझे लग रहा है कि जो है ना फॉरेनर्स पे सेट होता है जब वो इंडिया में आते हैं, कि मतलब जिसने इंडिया नहीं देखा वो जमे पैदा ही नहीं हुआ। वाकई में ये चीज देखने वाली है कि इंडिया जो है वो बहुत सारे फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वहां पर हम हमेशा बात करते हैं कि आपको बहुत वैरायटी नजर आती है, सिर्फ एक चीज में नहीं, हर चीज में आपको। कल्चर बहुत डाइवर्स है ना। कल्चर में तुम देख लो मॉडर्न, चाहे वो फूड हो, कपड़े हो, लाइफस्टाइल हो, मतलब कुछ भी हो, आप काफी ज्यादा इंजॉय करते हो उस चीज को। और दूसरा मुझे लगा था कि व्लॉग इस तरह का होगा कि मे बी वो अपनी जर्नी जो उनसी है वो, मतलब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वहां पर जो उनका रहा वो हमारे साथ शेयर किया। बट आई थॉट कि शायद वो वीडियो के थ्रू हम लोगों को बताएंगे, जो कि उन्होंने बीच बीच में लगाई नहीं। बट मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि बहुत अच्छी इंसान है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चूज किया कि अंडर प्रिविलेज जो बच्चे थे उनके लिए काम करने को, एक साल वहां पर उन्होंने गुजारा। बहुत कम लोग होते हैं, और उनकी मैं बोलूंगी कि जो सिंसियरिटी है या जो उनका पैशन है वो उनके चेहरे पर भी नजर आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो लास्ट में उन्होंने बात बोली ना मौजूद, उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो थोड़ी इमोशनल हो रही है इंडिया को लेकर, क्योंकि जो उन्होंने टाइम वहां पर गुजारा वो उनको मे बी याद आ रहा हो। अच्छा, वैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो जितनी उन्होंने कन्वर्सेशन की है ना, उससे मुझे ये ज्यादा फील हुआ कि उन्होंने जो अपना ज्यादा टाइम गुजारा है वो साउथ की तरफ उन्होंने गुजारा है। साउथ की तरफ गुजारा है। नॉर्थ की तरफ मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ की तरफ जो है उनका मुझे एक्सपीरियंस नहीं लगा कि नॉर्थ को उन्होंने एक्सप्लोर किया है। लेकिन अगर साउथ की भी बात करें, साउथ में भी देखने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लोर की जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं तो हमारे अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंस होते हैं, बट मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि हम अच्छी चीजों को हमेशा बताएं, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी कंट्री में जाएं जो कि हमारे अपने कंट्री में हमारे साथ इतने ज्यादा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं समटाइम्स कि हम लोग वो एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जब हम एक डिफरेंट जगह पर जाते हैं, डेफिनेटली एनवायरमेंट डिफरेंट होता है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए नई होती हैं, तो कुछ चीजें जो उनसी होती हैं आपको मतलब समझ में नहीं आती। तो आई थिंक ये चीज मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने एक पॉजिटिव चीज उनसी है वो बताई, और वो क्योंकि आपके लिए नेगेटिविटी निकालना बहुत आसान होता है, बट पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव चीजें शो करना। देखें जो होता है ना एक्सपीरियंस, वो लाजमत है। हर आप जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पे अलग अलग होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो आप पे इम्पैक्ट पड़ते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपने बात की थी अभी के वीडियो के एंड में जो है वो इमोशनल नजर आ रही थी, तो उन्होंने जितने इंडिया के टूर कर लिए ना, 6 टूर जो है तकरीबन थोड़े ही सालों में 6 टूर उन्होंने इंडिया के कर लिए हैं। तो वाकई एक बंदा कनेक्ट हो जाता है उस जगह से, वहाँ के लोगों से, वहाँ की चीजों से, कि उसे वो चीजें याद आती हैं। अगर हम अपनी बात करें ना, तो जैसे हमें अगर कोई जगह पसंद है, हम वहाँ पे जाते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं, सुकून फील करते हैं। और जब हम वहाँ से वापस आ जाते हैं ना, तो 2-3 दिन तो हमारे बेचैनी में, हालांकि कहते हैं कि अपने घर आके ना बहुत सुकून मिलता है, नो डाउट मिलता है, लेकिन जब आप उस जगह से वापस आते हैं ना तो आपको थोड़े दिन बेचैनी रहती है। एग्जैक्टली, जब मतलब वो ट्रैवलिंग का टाइम, फिर घर आके वापस आपको 2-3 दिन एडजस्ट करने में लग जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना, मैं गया था तो मैं जब वापस आया मेरा तो लाहौर में दिल ही नहीं था लग रहा। हालांकि आप एक शहर से दूसरी जगह पर मतलब एक ही कंट्री में ट्रैवल करते हो, और फिर वो तो जर्मनी से उठकर गई थी इंडिया में, जो कि इतना कलरफुल सा है। जर्मनी भी बहुत अच्छा, बट मुझे ऐसा लगता है कि एशिया में कुछ ना थोड़ी रंगीनी और गहमा गहमी और टाइप मुझे जहाँ तक एक चीज लगती है ना, एशिया
एशिया में देखने वाली बहुत सारी जगह हैं। एशिया में मतलब सबसे different- वैसे मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है लोग ही हैं, क्योंकि लोग जो उनसे हैं वो बाहर से आने वाले लोगों को इस कदर रिस्पेक्ट देते हैं, उनको इतनी ज्यादा अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं। ये तो हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हम दूसरे कंट्रीज जिनको हमने देखा नहीं हुआ, जिनके बारे में अब एशिया में ऐसे ऐसे कंट्रीज भी होंगे जिनके हमें नाम पे नहीं मालूम होंगे, ठीक है ना। तो अगर उनकी बात करें तो हमें नहीं पता वहाँ पे लोग कैसे हैं, वो वेलकमिंग है कि नहीं है। तो ये चीजें, जैसे अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करें, यहाँ के लोग एक दूसरे की कंट्री में जाते हैं तो ऐसा भी होता है कि जब उन्हें पता चलता है तो एक दूसरे से पैसे भी नहीं लेते खाने के। वैसे तो इस चीज से मैं मौज़म को बोलूंगी, मौज़म के मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ ना, ये लोग वाकई में डिफरेंट है बहुत ज्यादा। मैं बोलूंगी कि मेहमान नवाज है, क्योंकि यूएई में ये चीज मुझे देखने को नहीं मिली। वही ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपको यहाँ से आप इतने वेलकमिंग नहीं है जितना कि यहाँ के लोग हैं, और मतलब वो सिर्फ वही वाला है कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखो, उस तरह वाला उनका यही चीज बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर साउथ की तरफ जाते हैं या ईस्ट की तरफ जाते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, क्योंकि हम लोग है ना थोड़े मेहमान नवाज जो हैं उस तरह के लोग हैं। बिल्कुल, और यही चीज उनसे आई थिंक फॉरेनर्स को आज के टाइम में अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उनका कल्चर आई डोंट नो ऐसा है या नहीं है, मैं उस चीज के बारे में नहीं बात करूंगी, लेकिन शायद उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो इतना ज्यादा टाइम नहीं देते या वो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करते जितनी कि हम लोग शो करते हैं। बट एनीवे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से वो बात कर रही थी, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, मुझे मतलब ये चीज अच्छी लगी थी कि वो एक मतलब मिस कर रही हैं और वो बता रही हैं कि जिस तरीके मैं वापस आना चाहती हूँ, मतलब वो एक साल में तो जरूर इंडिया में ट्रैवल करना चाहती है हर साल, और उसके बगैर वो नहीं रहती। इससे पता चलता है कि उनकी कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा है, लोगों से वो कितना ज्यादा कनेक्टेड है। वेल ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी, थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। और इसी के साथ अब हमें दीजिए, हमारे वीडियोस करें, हमारे चैनल वीडियोस करें, कीप अस इन योर प्रेयर्स एंड गुड बाय।